felt like what the heck is the prototype in JS? So this video is for you. We are gonna break down what exactly prototype is. So I will explain you that what is prototype and how we can use it in a JavaScript, and then I will tell you about the prototype chaining and some functional prototype and some modern class and what is inheritance in the prototype. So these all stuff I'm going to cover. So let's get started. So first of all, if I talk about what exactly prototype is. So, okay. So every object in JavaScript has hidden property called proto. I just want to show you an example here. Suppose we have this const user is equal to this. And in new line, I do user and enter. So this is the empty object and it has this proto. This is the proto and it has some lots of function inside it, and there is one proto also which has some other prototypes, and then there is a proto again. Like one object has the proto which is an object, I can say, and then it has the proto which is pointing to null. So in short, I can say that if I have one object here, so its prototype or its proto is an object. Okay, is an object, and its proto, it is a null, right? Every object in JavaScript has a hidden property called proto. Think it like a hidden link or a fallback path JS use when it does not find anything directly in the object, right? So that right now, as I show you, that we cannot directly access the, or we cannot directly see this proto, but there is a something proto and some inbuilt methods like toString, value of, toLocalString, toString. These all the functions which is present in the object, which is come from the prototype only. So this is called a prototype. Now I want to give you a very nice example here how we can pass the prototype once of to other. Like हम पे यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट है which is an object, and then हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है person जिसके अंदर की है greet, और like this is the method which is present in this object. अब मैं यहाँ पे करती हूँ student dot underscore proto is equal to person. And now if I do the student, I can see this student is here and it has the name, and it has the prototype, and its prototype carrying the greet function which is coming from this person object. क्योंकि मैंने स्टूडेंट के प्रोटो में पर्सन पास किया है, दैट्स व्हाई इन प्रोटोटाइप आई कैन एक्सेस दिस ग्रीट फंक्शन, और फिर उसके अंदर एक दूसरा प्रोटोटाइप है which is pointing to the global prototype. Like as right now, I show you here, like self prototype, which is a prototype of a person. तो person का जो भी prototype है, वो student के पास आ गया just by using this proto, right? So when JS does not find the greet function, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये फंक्शन है और हमने स्टूडेंट को हमने ग्रीट दिया. नाउ इफ आई वांट टू एक्सेस इट लाइक डॉट ग्रीट, ग्रीट फंक्शन स्टूडेंट का तो नहीं है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ द पर्सन, राइट? बट वी कैन एक्सेस इन द स्टूडेंट ऑल्सो, एंड आई कैन से दैट hi is coming. So how it is happening? First of all, this greet function is searching inside the student. हम सबसे पहले student के अंदर ही function find करते हैं, नहीं मिलता है, then we go to the prototype of function person, and then वो वहां से हमारे लिए function call होता है, and then हमको output देते हैं. So when JS does not find the greet function in student, it goes to its prototype, which is a person, and that's how JS does the inheritance. इसको हम inheritance भी बोलते हैं कि student object ने person की properties और method को inherit कर लिया to use in itself. Now, if I talk about the prototypal chaining, so what exactly it is? Chaining is a something, suppose हमने एक word तो सुना होगा
कि everything in JS is an object. JS में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब ऑब्जेक्ट होती है, आइदर इट इज अ स्ट्रिंग और नंबर और बुलियन. ओके, सो स्ट्रिंग का जो प्रोटोटाइप होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है विच इज पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट, एंड देन ऑब्जेक्ट का जो प्रोटोटाइप होता है वो नल को पॉइंट करता है, एंड दैट्स हाउ वी कैन से string का prototype is pointing to the string and then string का prototype is pointing to the object. That's how the things work. कि ये at the end object को point करता है and then it point to the null, and that's how everything goes stop to the object. मतलब सब कुछ object पे जाके end हो जाता है, object के बाद सारी चीजें null हो जाती हैं. So that's how we can say that everything in JS is an object. Now, this link from a chain and we call it the prototype chaining. So it, like here I just want to tell you that this is the thing कि जो भी स्टूडेंट का प्रोटोटाइप था वो पर्सन के प्रोटोटाइप में गया, लाइक हियर ये स्टूडेंट का प्रोटोटाइप था, देन इट इज पॉइंटिंग टू द प्रोटोटाइप ऑफ द पर्सन, एंड इसके प्रोटोटाइप देखो ये एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे. दैट्स हाउ वी कैन चेक आउट द प्रोटोटाइपल चेनिंग. एंड फिर इसके प्रोटोटाइप में भी हमको कुछ मेथड्स मिल रहे हैं, एंड देन दिस full function is present here, then it's proto which is pointing to the object again. फिर इसके प्रोटो में हम जब जाते हैं देन इट विल पॉइंट टू द नल. सो दैट्स हाउ वी कैन से कि ये एक ऑब्जेक्ट था उसके बाद ये नल हो गया. सो दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट. सो दिस इज द प्रोटोटाइपल चेनिंग कि ये बाय स्लैश स्लैश प्रोटो स्लैश स्लैश से हमको पता चलता है कि व्हाट इज द चेनिंग ऑफ इट, कि ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे देन इट्स पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट, देन इट इज एट एंड इट इज पॉइंटिंग टू द नल. नाउ इन द सेम एग्जांपल if I do is an object, and here if I do the student dot stringify, I can get the object क्योंकि इसमें इसको स्ट्रिंग में जब कन्वर्ट होती है ऑब्जेक्ट की चीजें तो वो ऑब्जेक्ट में शो हो जाती है. इन अगर हमको की एंड वैल्यू को डायरेक्टली देखना है तो वी कैन गो विद द स्ट्रिंगीफाई, बट अगर हम इसको डायरेक्टली टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमको ऑब्जेक्ट में शो करता है. सो दैट्स हाउ वी कैन से कि हाँ जो टू स्ट्रिंग है, टू स्ट्रिंग तो मतलब इसके प्रोटोटाइप में है ही नहीं, ये तो इसके प्रोटोटाइप में था. So that's mean कि it is inheriting the property from the person, right? This is the thing, and I hope you are understand that how inheritance work. कि वो उसको पॉइंट तो करता है अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट तो करता है एंड वहां से वो चीजें इनहेरिट भी कर सकता है. दिस इज द प्रोटोटाइपल चेनिंग. Now, I hope you understood it well. Now, I just want to tell you something that if JS does not find something in student, so it will check in the person and then it will check to the another object and it will check to the inside mode and at end it will point to the null. So, अगर इसको कहीं नहीं मिलता है तो at end it can give the null in out. एंड एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जैसे हम ये डायरेक्टली प्रोटो एक्सेस करें देन डायरेक्टली हम इसको मॉडिफाई करें तो हमको ये चीज नहीं करनी चाहिए. वी शुड नॉट गो विद दिस. एंड इवन तुम इस ऐसे कहीं पे कोड देखोगे भी नहीं जहाँ पे हम डायरेक्टली ये प्रोटो को मॉडिफाई करें. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अंडरस्टैंड दैट हाउ द प्रोटो एंड प्रोटोटाइप्स वर्क so that you can understand it more deeply, like what exactly happened inside the object or inside the JavaScript, more depth in the object. Now, if I talk about the function prototype, so functional prototype is a special in JS. Every function in JS has a prototypal property. Now, ये भी मैं आपको एक न्यू एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज वी हैव दिस एग्जांपल फंक्शन डॉग एंड देन इसके डॉग के प्रोटोटाइप में मैं एक न्यू फंक्शंस क्रिएट कर दे रही हूँ. जस्ट लाइक हियर इसी प्रोटोटाइप में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस थे, राइट, ये वाले. तो सेम हियर आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन मोर फंक्शन हियर डॉट प्रोटोटाइप डॉट बार्क एंड दिस फंक्शन इज कमिंग हियर. दिस डॉट नेम मींस जहां पे भी मैं इस डॉग को यूज करूंगी, जिस भी डॉग जहां पे भी मैं इस डॉग को यूज करूंगी उसको ये 10 पॉइंट करेगा. मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट में जिस भी इंस्टेंस में मैं इस डॉग मेथड को इस बार्क मेथड को यूज करूंगी
वहां से ये 10 की वैल्यू लेगा, वहां से ये उस ऑब्जेक्ट पॉइंट आउट करेगा। नाउ D1 न्यू ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर मैंने टॉमी डाला, तो यहाँ पे दिस नेम इज कमिंग, सो दिस नेम इज नथिंग बट द टॉमी ओनली, and that's how we can say it has the name as Tommy. Or then again, this D1, it is an instance of object. Like we are using the new here, so that means we are creating an instance of object here. और उसके अंदर एक नेम आया, की वैल्यू आई विच इज ऑफ नेम एंड टॉमी, एंड देन उसके अंदर एक बार्क मेथड आ रहा है। बार्क मेथड मीन्स कि टॉमी से मूव्स। अब मैं यहाँ पे D1 डॉट बार्क करूंगी, सो आई कैन गेट this output. Tommy say wolf, which is coming from this functional prototype, right? This is also example of the prototypal inheritance, that how I can inherit one's property in another object. Like here I created a new instance and then I can access the all properties and method of this function inside it. I hope you understand that doc.prototype is an object, and we use when we use the new doc, js set and d1.prototype is equal to doc.prototype, means इसके जो प्रोटो है, इसका जो प्रोटो होगा d1 का जो प्रोटो है, उसमें doc का प्रोटोटाइप ऐड हो जाता है। Like if I show you the d1 here, so we can understand more betterly. Like D1 is coming like this, it created a new instance with the name of it, and इसके prototype में we can see the bug function, and this bug is saying the name is empty right now and all the things is coming, means ये this इसको point कर रहा है, तो यहाँ पे ये Tommy आ जाएगा and then say wolf, it will come. I hope you understand that all the dogs share one bugs function efficiently. Now I hope you understand that how we can inherit the property of one's function inside the another object or in another object. Like here I show you the example कि हमने कैसे person के object की properties student में use किया था, और यहाँ पे I show you that how I can access a new empty object, like एक new instance create किया मैंने इस functional prototype का, and then I can access, और ऐसे instance में बहुत सारे create कर सकती हूँ, right? So it is very helpful for the eh, it means it is very important for us that when we don't want to go with the reusability, कि हम same चीज बार बार लिख रहे हैं, that time either I can create one function and I can create lots of instances, अगर मेरे को same instances बहुत बार चाहिए, so it is very useful in that case, like reusability and do not repeat yourself method, so उस चीज के लिए बहुत अच्छा method है. Now prototype let us implement inheritance in JavaScript without any classes also. तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक क्लास फंक्शन, ये हमने क्लास बनाया था, अब हम इसको सेम चीज, मैं इसके लिए एक और एग्जांपल देती हूँ बाय यूजिंग द मॉडर्न क्लासेस। हमने यहाँ पे ये फंक्शनल क्लासेस से किया, नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट द न्यू क्लासेस। Here I created this class and it has this method drive, and now I created a new instance, and now this new instance is has the all methods and property of this car. So that's how I can access the C dot drive here, and at end I can go the room, right? So this is also an example of inheritance. Now here I just want to ask you a important question, that if I do one thing here, this thing class dot prototype dot drive is equals to class dot proto dot drive. Will it give the true or will it give the false? So it will give the true here, क्योंकि ये एंड ये बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम थिंग। अगर हम कार के प्रोटोटाइप के ड्राइवर पे जाएं, या फिर हम सी के जो एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट किया है इसके प्रोटो में जाके इस ड्राइव को एक्सेस करना चाहें, तो बोथ आर सेम, which both will point to the same thing. So that's why it is showing the true. So I hope you understand that what exactly the prototype is and what is the prototypal chaining also, and functional prototype, and how we can inherit the properties from one function to the another function. Now I just want to move some
I want to move to the this is all about the prototype, and I hope you like it. So please like and subscribe it, and also please drop a comment below that what exactly topic you want in the next video. So till then, keep watching and keep learning with me.